a ship. Okay. All right. So let us begin. So let us take case number 1. We are going from salt water to river water. Okay, so let us say we are going from Chennai and we are going to Haldia. Chennai being river water or dock water. So if the vessel is originally floating in Chennai in salt water at a even keel draft, 5 meters, let's say. Now I just put this ship at Haldia. So what will happen to the new water line? सिंकेज हो जाएगी सर और Sinkage हो जाएगी. Okay, so sinkage. So the draft will increase. We all agree on this? Yes. The draft will increase. So if she was even keel at Chennai, what will happen to her trim at Haldia? it will go by head, sir. It will go by head. Anybody feels the other way around? Or anybody feels there will be no change? Anybody feels? So that would depend on block coefficient too. Could depend on block coefficient. Okay. Anybody else has any other thoughts? सर उसका एलसीबी से होगा चेंज क्योंकि वाटर प्लान एरिया से होगा चेंज, तो उसका जो ट्रिम का फार्मूला होता है एलसीबी माइनस एलसीबी उसमें थोड़ा चेंज आएगा, इस वजह से ट्रिम चेंज होगी. इस वजह से ट्रिम चेंज होगी. Okay. Anybody else? Has any other thoughts? All right. So let us say this is the keel, and let us say this is the G, and this is the B. So B is the center of buoyancy, G is the center of gravity. Okay. So basically, I have a situation where the vessel has gone from Chennai to Haldia. The draft has increased, and because the ship has got a shape which resembles a water plane, something like this. That is, she is narrow forward, wide-bodied aft. So therefore, this is the water plane look, the top look. This is the bow, this is the stern. She's narrow forward, she's broad at the back. So whenever the sinkage will happen, there is a change in underwater volume. The change in underwater volume, aft will be more than forward. You all agree on this? Yes, sir. So therefore, the new center of buoyancy will shift to B1, which will be this above Bravo, but aft of Bravo. Do you agree? वीडियो तो नहीं अटक रही सर. हाँ जी. कहाँ से अटक रही थी आपके बीच में? सर वीडियो क्या हो अटक गया? रही है सर. वीडियो अच्छा, पॉज वीडियो हो रही है, मतलब अटक रही है. फ्रीज हो रही है सर Okay, everybody. अच्छा, okay. Let me just leave the room and come back again. Let me see.
How is it now? How is it now? Sir, okay, sir. Okay for the moment. Loud and clear, sir. Okay. So Bravo has shifted to Bravo 1, aft of and higher than Bravo. And now, therefore, what will happen is through G, the W was acting vertically downward because the displacement of the vessel was W, capital. That was acting through center of gravity, vertically downward. The equal and opposite force of buoyancy will act vertically upward through Bravo 1. So this is your force of buoyancy, also equal to W. So now you've got two forces. W acting vertically downward, you have got another W acting vertically upward. So a turning couple is formed. And that couple takes the shape of a trimming moment. And therefore, a W displacement is acting vertically downward like this, and a force of buoyancy is acting vertically upward like this through Bravo 1. So a turning couple is formed. This turning couple takes the shape of a trimming moment, and therefore it will start to trim the vessel by head. And as the vessel keeps going down, Bravo 1 will start traveling and will come to Bravo 2 till it comes vertically below Golf. If I magnify this diagram, this triangle, the magnification will look something like this. This is the magnification of the triangle. And so therefore, Bravo 2 becoming one vertical line, vessel will be again in equilibrium. And vessel would be down by head in the final condition. Vessel would have a trimming moment by head. Vessel will have a trimming moment by head. सर तो उस टाइम पे फिर ट्रिमिंग मोमेंट कैसे बचेगी सर? मतलब बचेगी कैसे मतलब कि सो ये इसको नीचे लेके, और क्योंकि ये इसको नीचे लेके जा रहा है जहाज को, ये जहाज को क्यों नीचे लेके जा रहा है, तो देयरफॉर रुकेगा कब? When will it stop? It will stop when Bravo 2 and Golf become one vertical line. तब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा and that will stop. सर वर्टिकल लाइन की हॉरिजॉन्टल लाइन सर? वर्टिकल लाइन. तो मतलब फिर B1 के मतलब G के नीचे और B1 के ऊपर आ जाएगा, B के ऊपर आ जाएगा B1. B2 is the final position of the B1. So the B has actually traveled from B to B1 and then B1 to B2. Okay sir. So the B has traveled like this and then like this. So मतलब हम उसको resolve कर रहे हैं. In reality, we know it travels longitudinally, but there's a vertical component to it and there's a longitudinal component to it. So उसको resolve कर रहे हैं हम. So sir, right now B2 is at G, at point G. No, it's below G. Okay. B2 and Golf are in one vertical line. Got it. सर B2 पे ट्रिमिंग मोमेंट नहीं होएगी ना, मतलब बाय हेड नहीं जाएगा? उसके बाद तो वो स्टेबल हो, इक्विलिब्रियम पे आ गया ना, तो अब वो रुकेगा. यस सर. भाई रुकना कब, उसको रुकना है ना, नहीं तो रुकेगा नहीं तो चलता ही रहेगा ना डाउन. इट शुड स्टॉप एट सम पॉइंट. यस सर. सर उसकी बातें कर रहा हूं मैं अब. ठीक है, इज दैट ओके? यस सर. ओके. अब सपोजिंग ये तो था, मैं इवन कील था, तो जब मैं हल्दिया पहुंचा, तो अगर मैं चेन्नई में 5 मीटर ड्राफ्ट पे था इवन कील, तो हल्दिया में मेरा सिंकेज भी हुआ, यानी कि लेट्स से 5.5 हुआ, और साइमल्टेनियस भी गया, तो मेरा फॉरवर्ड ज्यादा होगा, शायद 5.6 होगा, और आफ्ट शायद 5.4 होगा. सर एग्री? सर बीच में सर वो हल्दिया के बाद सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी. हल्दिया 5 मीटर ड्राफ्ट से आगे अटक रहा है सर आपका. चेन्नई में 5 मीटर ड्राफ्ट था. ओके सर. चेन्नई में हल्दिया में पहुंचा, तो मेरा फॉरवर्ड ड्राफ्ट शायद 5.6 होगा. ओके सर. और आफ्ट ड्राफ्ट शायद 5.4 होगा. सिंकेज और वो ड्राफ्ट आप हो जाए. ठीक है सर. सो कहने का मतलब ये है, मैं फाइनली डाउन बाय हेड हूं. करेक्ट सर. सपोजिंग मैं चेन्नई से वेस्टर्न निकला होता, यस सर. तो depending on the quantum of my trimming moment, I could have arrived in Haldia with a lesser stern trim, because Yes. my bow would have gone down, but not so much. पूरी trim खत्म नहीं हुई. So if my initial trim at Chennai was very large,
then I will arrive at Haldia with a small stern trim. Is that okay with everyone? Yes. Yes, sir. Does everybody agree on the statement which I made? Yes, sir. Yes, sir. Anybody who's not understood the statement what I've just made? Repeat करेंगे सर आवाज कट गई थी अभी सर Getting stuck in between. Can you please repeat? I sailed out from Chennai with a large stern trim. Then I will arrive at Haldia with a smaller stern trim. Okay, sir. Is that okay with everyone? Yes, sir. So that's what I was trying to say. कि मेरा trimming moment by head है does not mean मेरी final trim down by head है. Yes, sir. Trimming, हाँ सर वो जैसे उसमें कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में ट्रिमिंग मोमेंट हेड है पर पूरा रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग क्वेश्चन. वो अलग question है. Trimming moment is by head does not mean my final trim is by head. क्योंकि वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा सर. It doesn't mean that we are by Is head. that okay? Is that okay? Yes, sir. If I leave Chennai in a down by head condition, if I leave Chennai with a trim down by head, when I arrive Haldia, I will be more down by head. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is the concept which I wanted to explain. Anybody has any questions so far? सर जो ट्रायंगल है तो सर B1 B2 का उसका दोबारा उसे किस वो B2 B1 का कैसे आता है? Okay. So I was trying to explain कि B2 B1 समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. वाटर प्लेन ज्यादा होगा आफ्ट में तो वो थोड़ा ऊपर और पीछे ट्रैवल करेगा B1. Correct. So B1 will be higher than B and after B. Yes. And now vessel is in unstable equilibrium because center of buoyancy and center of gravity are not in one vertical line. So therefore, it is acting vertically downward through center of gravity, and the force of buoyancy is acting upward through Bravo 1. As a result, a turning couple is formed, which will trim the vessel by head. And this process will continue till one travels and reaches to Bravo 2. When Bravo 2 and Golf become in one vertical line, they're in stable equilibrium. And she will stop. That's what I was trying to say. Is that okay? So let's write this down. Let सर ऐसा भी केस हो W सकता है क्या सर कि जो ब्रावो 2 है इट कैन बी FFG. I couldn't get you. सर जो ट्रायंगल बनाया है आपने B1 B2 का सर. आपने कहा सर कि जब B2 पे आ जाएगा इट विल बी वर्टिकली अबव. Bravo 2 will be vertically below Golf and above Bravo. So that means Bravo if 2. B2 comes below G, that means she becomes in even keel. She is in stable equilibrium, not even keel. Don't bring even keel into the picture now. She is in stable equilibrium. She is in stable equilibrium. See, she became unstable because she went from saltwater to river. The B went to B1. Now B1 has to come back below G so that the P in stable equilibrium. Or vessel can be in equilibrium. That's what it is. Okay, Is that okay? So let's write down this. All this, whatever we have discussed, let's write it down now. So let W be the displacement of the vessel. So please write it down. Let S be the density seawater. Let Vs be the underwater volume seawater. Let Golf be the COG of the vessel. Let Bravo be the COB. Let Bravo be the COB in seawater. Let rho R be the density river water. Let VR
be the underwater volume, river water. Let Bravo 1 be the COB in river water. So let us start. Vs is equal to W upon rho s. Vr is equal to W upon rho r. If there's anything you're not understanding, please ask me. Okay. Which is more? Vr is more. So Vr minus Vs will give you small v, which is change in underwater volume. Change in underwater volume. So small v is equal to W upon rho r minus W upon rho s is equal to W बाहर निकाला 1 upon rho r minus 1 upon rho s is equal to W into rho s minus rho r upon rho r rho s. By another formula, we have BB1 is equal to small v into FB upon VR. By another formula, we have BB1 equals to small v into FB upon VR. So ये कहाँ से आया फॉर्मूला BB1 वाला? ये एक फॉर्मूला है जो कि डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है. इट इज कॉल्ड एज अ मोजलीज फॉर्मूला. वी जस्ट यूज द फॉर्मूला. बेसिकली मोजली ने एक फॉर्मूले को डिराइव किया था. ये वो फॉर्मूला है. सर ये सेकंड लाइन में क्या लिखा सर आपने? BB1 is equal to small v into FB upon VR. सर इसमें FB क्या है? Where FB is LCF difference LCB. Where FB is the LCF difference LCB. So if I put this formula of small v into this, I get B is equal to W into rho s minus rho r upon rho r rho s into FB upon VR. Are you with me on this? Are you with me on this? Yes, sir. Okay. W upon rho r is equal to VR. So VR and VR cancels. So what do you get? FB into rho s minus rho r upon rho s. Agreed on this? Do you agree on this? Yes, sir. Okay. Now, so the turning moment which will be caused will be the force, which is W, into the lever through which it is acting, that is BB1. This will be the turning moment by head. This will be the turning moment by head, that is W, into FB, bracket, minus rho r upon rho s by head.
ठीक है, so therefore the trim change or trim cost is trimming moment upon MCTC is equal to W into FB upon MCTC rho S minus rho R upon rho S. This becomes my head, and this is my formula for case number 1. This gives me my TC or trim cost. सर इसमें W अपॉन रो एस वो VS हो गया ना फिर? W अपॉन, हाँ लेकिन मैं उसको नहीं भी कुछ कर रहा, बिकॉज मेरे को तो ये सारी चीजें मेरे को क्वेश्चन में दी हुई होंगी. यू राइट, W अपॉन रो एस विल बी VS, बट मेरे को तो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दी हुई होगी, तो मैं ये सीधा ये फॉर्मूला यूज करूंगा. ओके सर. ठीक है, इज दैट ओके? सो ये मेरे को TC दे देगा. ये जो होगा मेरा चेंज इन ट्रिम आफ्ट विल बी TC इनटू LCF अपॉन LVP. ये मेरा TA होगा. TF क्या होगा मेरा? TC ये मेरा TF होगा. सो ये मेरे सारे ट्रिम के कंपोनेंट्स हो गए, एंड इनको मैं लगाऊंगा, एंड आई विल गेट माय फाइनल ड्राफ्ट्स. प्लीज रिमेंबर देयर विल बी अ मीन सिंकेज. मीन सिंकेज का फॉर्मूला, मीन सिंकेज का फॉर्मूला और मीन राइज का फॉर्मूला बेसिकली आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास. अभी नहीं. इसका मीन सिंकेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर W अपॉन TPC. कौन सा W होता है? वो छोटा वाला. यस सर सर स्मॉल W. यस सर, वो छोटा बुलेटिन W बोर्ड. होता है. वो तो इसको यूज नहीं कर सकता. आई कैन नॉट यूज दैट, यस बिकॉज उसमें तो मैं कार्गो अगर लोड कर रहा होता तो मैं छोटा छोटा W अपॉन TPC यूज कर लेता, बिल्कुल ठीक था, फिर तो फर्स्ट क्लास. लेकिन यहाँ तो मैं कार्गो ही नहीं लोड कर रहा. ये तो मैं खाली बस एक जहाज को चेन्नई से हल्के ले जा रहा हूँ, कोई लोड नहीं कर रहा, मैं कोई डिस्चार्ज नहीं कर रहा. तो तो इसमें तो सर मीन राइज और मीन सिंकेज नहीं होगा ना फिर? सर क्यों नहीं होगा? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ब्रावो एंड ब्रावो 2 क्या है? The vertical distance between Bravo and Bravo 2 क्या है? This is your mean sinkage वाला component, vertical. This is your the one which is causing your vessel to trim. तो ये आपका वो वाला component है. तो एक vertical component तो है भाई. You cannot say कि mean sinkage नहीं होगा. You cannot say that. वो ये technically wrong हो जाओगे. जब आप चेन्नई से गए, हल्दिया पहुंचे, जहाज डूबा है. There is no doubting on this. मतलब ड्राफ्ट बड़ा है. Yes or no? उसको हम क्या कहते हैं हमारी भाषा में? सर सिंकेज सर, नो डॉक वाटर लॉन्ग. हाँ, मींस जी सर, तो डेंसिटी की वजह से. उसको हम कहते हैं डेंसिटी की वजह से. तो उसको हम फ्रेश वाटर अलाउंस या डॉक वाटर अलाउंस कहते हैं. करेक्ट और नॉट? यस सर. तो फ्रेश वाटर अलाउंस का क्या फॉर्मूला है? W अपॉन 40 TPC. करेक्ट? यस सर. करेक्ट. Yes. और डॉक वाटर अलाउंस का क्या फॉर्मूला है? फ्रेश वाटर फ्रेश अलाउंस वाटर इनटू That's चेंज ऑफ डेंसिटीज अपॉन 0.025. 0.025. So dock water allowance. So dock water allowance is the one जो लगेगा, which will cause the vessel to, which will cause the mean draft to increase or decrease, whichever be the case. ठीक है? Is that okay? Up here, I want you to do revision of this first. So I want you to revise your volume 1 के freshwater allowance, dock water allowance के formulas. Okay? So please go through your nutshell, Subramaniam. So volume 1, second rates वाला part. I want you to go through chapter on FWA and DWA. Can you just do that, please? Freshwater allowance, dock water allowance. सर लेकिन डेरिवेशन तो नहीं है ना सिलेबस Derivation में, मतलब इसका तो कुछ नहीं आना है वैसे भी. ये लेकिन ये जो मैंने बोर्ड पे किया है, ये पूरा क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ. मतलब दिस इज डेरिवेशन ओनली ना सर? नहीं, ये पूरा एक्सप्लेन है ना, पूरा का पूरा आपको पूरा चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ अभी. अच्छा सर. ये नंबर क्वेश्चन आता है 25 नंबर का. हाँ, पूरा क्वेश्चन आता है इसमें, थ्योरी का क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल आल्सो. न्यूमेरिकल आएगा तो 30 नंबर का आएगा पूरा, और थ्योरी का आएगा तो 20 नंबर का आएगा.
Okay. सर ये आपने जो निकाला था ना, इस- थ्योरी का आएगा तो हमें ये सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आएगा तो वी विल यूज द फार्मूला एंड फिनिश। Absolutely. 100%. ठीक है, it's over as yet. सर ये कौन से क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए बोला था, नेटवर्क इशू था। I want you to go through volume 1, Subramaniam, freshwater allowance, dock water allowance. ओके सर। I want you to revise the formula. I want you to look at that chapter for the formulas. सर ये BB1 आपने सभी निकाला था ना, इसको व्हाइट बोर्ड पे सब जरा दिखाएंगे दोबारा से। ये BB1 ये कैसे आया था BB1? कौन सा वाला? तो ये कौन सा वाला? BB1 से लिखा है ना, V into FB upon VA। ये हाँ राइट, हाँ ये वाला। सामने ये वाला। हाँ This is a Moseley's formula. एक मोस्ली का एक फॉर्मूला है, तो उसने डिराइव किया था। इसकी डेरिवेशन, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हाँ सर। तो ये उसने डिराइव किया था। तो इसका आंसर क्या लिखा? चेंज इन वॉल्यूम इनटू FB अपॉन VA। स्मॉल इनटू FB अपॉन VR। और FB की जो डेफिनेशन है वो है LCF डिफरेंस LCD। यस सर। And so this TC we have calculated, this is by head. This is by head. This is by head. Okay. So then we calculated TA, then we calculated TF.